welcome back to my channel. So I'm Anushtha if you don't know me, and I make videos on fashion, beauty, lifestyle and also do a lot of vlogs. Okay, so video starting से पहले please bear with me with all the noises जो हो रही है ऊपर नीचे. Everywhere the construction is happening and I'm so like tired of this construction. अब बॉम्बे में रह नहीं सकते without this construction thing happening. क्या कर रहे, वीडियो तो बनाना है ना, तो please bear with me. And yeah, so okay, so today's video is about some dewy makeup look जो आप हर दिन भी कर सकते हो, and I'm not gonna do and this is without foundation. मैं पहले अपना स्किन केयर कर चुकी हूँ. Yeah, so now without any other without wasting any time, let's get into the video. And it goes a little something like Okay, so as you know, I'm already done with the skincare part. तो मैंने सब cream लगा लिया है and also apply the sunscreen and lip balm, everything. So now let's get started with the makeup. So for the first thing, I'm gonna apply this MAC stroke cream. So just apply all over your face. बहुत ज़्यादा हाथ में आ गया मेरे, but don't apply this much quantity. But आपको बहुत ग्लो चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो. It depends on you. और मैक्स स्टोन बहुत अमेजिंग है, वो एक्स्ट्रा ग्लो के लिए बहुत अच्छा लगता है. ओके, नाउ विल जस्ट रब स्लाइटली ऑल ओवर द फेस. और नेक पर लगाना मत भूलना, अदरवाइज बहुत वियर्ड लगता है. See, I have applied the MAC Stroke cream and it's so necessary for that dewy, nice, glowy look on your face, which I totally love. For the next thing, we're gonna go with NYX concealer. So हम concealer apply करेंगे under eyes पे. मुझे थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए अभी, so और हम मैं कोई फाउंडेशन लगाने वाली हूँ. जस्ट वी गो विद कंसीलर. और आपको जो है भी अदर जगह आपको लगाने हो, थोड़ा आपको स्पॉट्स हो, मुझे पिंपल हो गया, पता नहीं कैसे ब्रेकआउट हो गया, मुझे होता नहीं यूजुअली चीक पे. सो या मैं थोड़े यहाँ पे भी स्पॉट्स मुझे लग रहे हैं. अब यहाँ पे आप थोड़ी कंसीलर लगा लेंगे है ना. ब्लेंड करने के लिए जस्ट यूज़ माई फिंगर्स. तो मैम टिप्स यूज़ करेंगे. आई थिंक मैं रिसेंटली डिस्कवर किया, आई थिंक इट्स बिन मंथ्स आई एम यूजिंग ओनली माई फिंगर्स टू ब्लेंड माई कंसीलर. ऐसे ऐसे जस्ट हल्के हल्के आप ऐसे टैप करोगे, डोंट रब अदरवाइज ख़राब हो जाएगा. सो जस्ट टैप 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 अंदर की तरफ, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू ब्लेंड योर कंसीलर. और मैंने कंसीलर थोड़ा ज़्यादा लिया है बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स. आप थोड़ा कम कंसीलर ले सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा भी लग सकता है. तो आपके हिसाब से आपको जितना लेना है, जस्ट टेक दैट मच कंसीलर. Foundation only, you can see it has covered everything. So for the next thing we'll go is for the eyebrows. इसके लिए मैं Gove Proof brow pencil use करूँगी from Benefit, which I've been using for last 1 year. I think I couldn't go with any other product for my eyebrows because जो time लगता है बनाने में, and this is the best one in the market. For me at least, and मैं और भी ट्राई करने वाली हूँ. Now I'm gonna go with this one.
can see I've made the eyebrows. अब मैं ब्रश करूँगी जो सोने से ताकि मैं इसे ऊपर ऊपर ब्लेंड कर सको. So damn, eyebrows are done. And you can see it's such a big change, you know, eyebrows करके एकदम अलग face लगता है. And I just love that. Okay, अब next चीज़ पे चलते हैं हम. So the next thing we'll do is I'm going to use a eyeshadow. For that I'm going to use the Huda Beauty Neon Eyeshadow Palette. And this is the colors. These are the colors. So अभी मैं ये वाला color use करूँगी. This one. And then this one. और मैं ये दोनों कलर्स बहुत लाइटली यूज़ करूँगी बिकॉज मैं कीप इट डूई. एकदम सटल, एकदम थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे. Just do it like this. एकदम हल्के हैंड से आप लगाओगे. So just that much. For on the other eyes. ये बहुत लाइट लगा है. दिस लुक्स सो प्रीटी. ये वाला ग्लिटर यूज़ करेंगे, वेरी लाइट. दिस इज हाउ इट लुक्स. Looks really pretty, right? ये है ब्लैक ग्लिटर. नाउ मैं थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ना लगे. इट शुड नॉट बी लुकिंग लाइक टू मच. Just with your hands blend it nicely. Then I'm going to use this Boy Brown's compact only under my eyes ताकि you know sweat हो थोड़ा ये ज़्यादा, because under eyes पे I put a lot of concealer तो ज़रूरी है. So there we are, done with the compact also. Or suddenly you can see the under eye area has brightened up, you know. So now it's time for the mascara. So पहले हम lashes curl कर लेंगे. फिर हम लोग सबसे पहले हम lashes curl कर लेंगे. It's very important. मेरे को तो बहुत ज़रूरी है, otherwise मुझे mascara अच्छे से लगता नहीं. So I think you should first curl your lashes और बहुत ध्यान से करना चाहिए. Otherwise you can pretty much hurt your eyes. Apply this mascara and this is from Benefit. It's roller lash mascara और ये उसका मिनी वर्जन है. So there I am done with my mascara. It really takes me a long time to do my mascara. I make weird faces while doing the mascara, so please excuse me. And yeah, I'm done with the mascara, with the eyeshadow, eyebrows. And now face की बारी आती है, इधर की बारी. Okay, so first thing face के बाद हम लोग करेंगे bronzer. Then I'm going to use the Hola bronzer by Benefit. And this is again my all-time favorite bronzer. I'm really obsessed with cream products. Like cream products does amazing for Dewy Makeup Look. मुझे क्रीम ब्रॉन्जर ढूंढ रही हूँ. आई एम डोंट लुकिंग फॉर इट. सो अगर आपको कोई क्रीम ब्रॉन्जर पता हो या सो प्लीज़ डू लेट मी नो. आई जस्ट लव क्रीम formula, you know, cream formula makeup products. They give you the best glowy, dewy effect. तो यहाँ से लगाएंगे ऐसा करके. So as you can see, the effect of the bronzer is so good, you know. It gives a dimension to your face, you know, to your plain canvas. So yeah, now हम थोड़ा यहाँ on the jaws. थोड़ा forehead पे. So then I'm going to use the cream blush by Bobbi Brown. I love cream blushes. They give you the best dewy glowy effect and they're just so natural. So this is the shade.
and then just tap 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 tap. And now it's time for the highlighter. I'm gonna use this highlighter by Fenty Beauty. This is again one of my most favorite highlighters, and this is how it looks. So for the highlighter हम अपने cheekbones पे लगाएंगे यहाँ पर ऐसे और on the bridge of the nose. Okay, यहाँ पर then under the eyebrows. Now with fingers just blend the highlighter. There we are, done with the full face. Now the only thing remaining is our lips. तो लिप्स की सबसे पहले मैं लिप प्लम्बर लगाऊंगी जो कि टू फेस है, जो आप नायका से भी ले सकते हो. I love this lip plumber, just amazing. And then for the lipstick I'm going to use this one. So this is a Boy Brown crushed liquid lip, which is again glossy and it's just amazing. So you can see the full face is done, and I'm just loving this look. You know, it's super. I think I've just done what is eyes थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, but you can do minimal eyes also. But it goes with every look, you know, night look and day look. For the night you can just do a lot of red lips, and day में थोड़ा gloss को थोड़ा subtle कर सकते हो. So yeah, this is the look. So that's it for the video, guys. I really hope you liked it, and if you did, then do let me know in the comment section below, and don't forget to subscribe to this channel. Make sure you give this video a big thumbs up and share it with your friends, family, and I'll see you in my next video. Till then, bye.